हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Heard Shri B.P. Verma, Learned Counsel for the petitioners, and Shri Rajesh Tripathi for respondent numbers 1, 2, 3. Full stop para. Petitioners have approached this court challenging the letter dated 15th March 2014 communicated to him by the office of the city magistrate Mathura that military authorities have refused to grant no objection certificate for construction of multi-storied building adjacent to A1 defense land full stop para. Petitioners claiming to be Bhumidhar of plot numbers 228, 229, 230, 231, 234 and 235 situate in Gram Narholi, Tehsil Sadar, District Mathura after seeking a declaration under section 143 of the UPZA and LR Act, which was duly granted wide order dated 20th June 2003, started some constructions over the said land which was objected by the officers of the station headquarter Mathura Kent, and they forcibly stopped the construction for want of no objection certificate from the army authorities full stop. Petitioners made an application dated 27/10/2011 before the city magistrate for obtaining no objection certificate from the station headquarter Mathura Kent in accordance with the guidelines issued by the Government of India Ministry of Defence dated 18th May 2011 full stop para. However, when no decision was taken despite various communication and letters, the petitioners approached this court by filing writ petition number 37904 of 2013, which was disposed of wide order dated 16/7/2013, requiring the petitioner to make a fresh representation before the competent authority, who in turn was directed to take appropriate decision with all expedition, preferably within a period of 2 months from the date of receipt of the application full stop. Still, when no decision was taken, the petitioner was compelled to file a contempt application number 6192 of 2013, which was also disposed of, giving one more opportunity to the authorities to take decision in the matter full stop para. Thereafter, the petitioner was informed wide impugned order dated 15th March 2014 addressed to the city magistrate that military authorities have not agreed to grant no objection certificate for construction of multi-storied building on account of the fact that the land on which the building was proposed to be constructed was adjacent to A1 defense land full stop para. Learned counsel for the petitioners contends that the order is bad in law inasmuch as it does not record any reason for rejecting the claim of no objection certificate to the petitioners full stop. He further points out that if it was categorically brought to the notice of the authorities that the plot in dispute over which the construction is sought to be raised by the petitioner is surrounded by residential colony on western side and a market on the northern side, and on the southern side there is a railway line full stop. He further points out that the authorities were duly informed by the petitioners that they do not intend to raise any multi-storied construction, but only ground and first floor are to be constructed, and without considering these aspects of the matter, the no objection certificate has been refused full stop para. A counter affidavit has been filed by the respondent authorities stating that the Khasra plot number 236, which is A1 defense land,
is being managed by local military authorities for the purpose of army, that is training activities, control of vehicle movement, establishing of communication attachments along with equipments, and loading slash unloading of military stores as a part of ordnance depot unit during operations and mobilization for war, full stop. It is further alleged that the land is kept barren, being camping ground for aggression forces for northern and western sector in war, full stop, over. तो फ्रेंड्स ये हो चुका है 110 की स्पीड का डिक्टेशन है इलाहाबाद एपीएस हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एपीएस के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम आए हुए हैं, जैसे कि मथुरा है, तो मथुरा आपका क्या करेगा कि एम और टी एच आर, टी एच में आर का हुक और मिरर वर्जन बनेगा अबव द लाइन, एम टी एच आर और दैट की वॉवल आफ्टर में, ठीक है। आर अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या है इसमें, नरहौली, नरहौली के लिए एन में आर का हुक लगा दीजिए। नरौली अगर बहुत छोटा करना है तो एन में आर का हुक और डाउनवर्ड एल, ठीक है। एल और एल में आफ्टर में ई की वॉवल, नरौली से नरहौली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए, बनाना है पूरा, तो एन में आर का हुक बना के डाउनवर्ड एच और अपवर्ड एल, ठीक है, और ई की वॉवल, नरहौली हो जाएगा, ठीक है। और सदर आपको पता ही होगा, सदर बनता है एस डी आर, मतलब आर की तरफ से सर्किल लगाकर अबव द लाइन डी बना दीजिए, ठीक है। मतलब जैसे जिस तरफ आर का हुक लगता है उस तरफ पूरा सर्किल बना के डी बना दीजिए, वो सदर हो गया, और डबल डैश लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें कोई नाम वगैरह कुछ आए तो थे, चलिए इसमें कोई नाम ज़्यादा आए नहीं है, ठीक। तो ये डिक्टेशन है, लेके बताइएगा कैसा लगा आपको। वर्ड्स 600 वर्ड्स हैं, ठीक है। 500 की डिक्टेशन आएगी एग्ज़ाम में। और राजेश त्रिपाठी हैं, तो अपवर्ड आर जे और सर्किल राजेश, और त्रिपाठी पूरा बनेगा थ्रो द लाइन टी आर, टी और टी एच, और टी एच में ई की वॉवल, ठीक है। वर्मा वगैरह तो बहुत आसान है, आप लोग बना ही लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और डिक्टेशन पसंद आए, प्रोनाउंसिएशन वगैरह में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले डिक्टेशन में।